Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. Okay, we will continue with this tax unit. So far we have done the reading of Stiglitz, chapter number 18, 19 and 20. Now rest of this unit is Hendrick and Miles. Start with the important chapter, tax evasion. So the content for this tax evasion will be, what is the difference between tax evasion and tax avoidance. Then second part will be the factors affecting tax evasion, and there is a game of tax compliance. So basically three parts here: tax evasion and tax avoidance difference, factors affecting tax evasion, and third is tax compliance. You can note here, chapter number 17. Chapter number 17, tax evasion. Content for this chapter will be tax evasion and tax avoidance. Then factors affecting or determining factors affecting tax evasion. ये मेन पार्ट है चैप्टर में. Factors affecting tax evasion, and those factors include, mark 4 points there. One is probability of detection. So whether you are caught evading tax or not, and what is the chance of getting caught. So probability of detection. Other is how much will be the fine that you will have to pay if you are caught. So the rate of fine. It also depends upon level of income. Greater will be the income, greater will be your preference to evade. And fourth factor will be rate of tax rate. So 4 factors determine our decision whether to evade and how much to evade, or whether not to evade. And other part is tax compliance game between tax authority and taxpayer. So basically certain topics in tax evasion and tax avoidance first, then factors affecting the tax evasion. To explain this part, you have to draw budget line, then indifference curve, and by using budget line and indifference curve you determine how much tax has been evaded, and then how that tax evasion will be affected by change in probability of detection, change in fine rate, and change in level of income, and change in the rate of tax. So make the first heading tax evasion and tax avoidance. Remember, in tax evasion and tax avoidance, the fundamental difference is that tax evasion is something which is illegal, but tax avoidance is not illegal. It is not illegal in the sense you avoid the tax by reorganization or just by manipulation, but that is not illegal. Say for example, in order to avoid the tax, firm is showing greater depreciation, but showing greater depreciation is not illegal. So if by reorganization of our economic activity, if you are able to avoid the tax, that is legally permitted, but what is not permitted is evasion of that tax. So tax evasion is illegal and tax avoidance is legal. So mainly you have to first of all, जो written part होगा, in that first of all you have to define what is tax evasion and tax avoidance. Now in order to explain further, it is being said that if you have to measure tax evasion in any country, now how we can measure tax evasion? Now if you go by the survey,
then the person who is hiding the tax or evading the tax, since it is illegal, तो वो कभी कन्वे ही नहीं करेगा कि उसने कितना टैक्स इवेड किया है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एनी एस्टिमेट अबाउट टैक्स इवेजन. तो टैक्स इवेजन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर because the person who is evading tax has every reason not to convey that information to you or to the surveyor. जो सर्वे कर रहा है उस पर्सन को, वो पर्सन जो टैक्स इवेड कर रहा है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी पास ऑन नहीं करेगा. इसलिए डिटरमाइन करने का इनडायरेक्ट मेथड नॉर्मली फॉलो करते हैं. इनडायरेक्ट मेथड इन द सेंस, इफ़ आई से देयर हाउ मच इज द इकोनॉमी जीडीपी जो हमने ऑब्जर्व कर रखा है, एंड हाउ मच इज द मेजर्ड एक्टिविटी इन द सेंस वन वे टू डिटरमाइन द टैक्स इवेजन. सपोज इफ अ पर्सन रिवील सम इनकम, तो ये इनकम उसने अपना रिवील कर रखा है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और पर्सन के पास जो एसेट्स है हाउस के टर्म में, गोल्ड के टर्म में, अदर ड्यूरेबल गुड्स के टर्म में, अगर ये इनकम और एसेट मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेटर एसेट एंड यू हैव लेस इनकम. दैट मीन्स यू हैव शोन लेस इनकम बट यू आर ओनर ऑफ मेनी एसेट्स. सो दिस विल बिकम अ केस ऑफ disproportionate asset, and exactly that disproportionate asset is mainly due to tax evasion. So government will come to know if you are having more assets and your income tax record show that you are showing less income, that means you must have evaded that tax by not declaring that income. तो बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड होता है टैक्स इवेजन को कहीं भी मेजर अगर कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ओनली द मीनिंग बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस. नाउ मेजरली वी हैव टू एक्सप्लेन द टैक्स इवेजन पार्ट, बट इस पार्ट को बेसिकली फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है. नाउ टू एक्सप्लेन इवेजन डिसीजन. इवेजन डिसीजन हम जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले यहाँ पे रिलेट करेंगे. एग्जाम्पल माइक्रो की तरह दे रहे हैं दैट सपोज अ पर्सन इज हैविंग सम एक्चुअल इनकम, marked his actual income as Y and declared income, वो इनकम जो उसने टैक्स अथॉरिटी को शो किया, say that declared income is X. So if you are evading tax, it means your declared income will be less than actual income, and if Y is equal to X, then actual income declared income बराबर है, so you are not hiding anything. So first of all, how much is undeclared? How much is undeclared income? That undeclared income will be actual income minus declared income, Y minus X. ठीक है, तो Y minus X is your undeclared income. If I say टैक्स रेट इज T, 10%, 5% जो भी टैक्स रेट है, सो हाउ मच इज अनपेड टैक्स, हाउ मच टैक्स हैज बीन अनपेड. सो अनपेड टैक्स विल बी ऑन दैट अनडिक्लेयर्ड इनकम, जो इनकम हमने डिक्लेयर नहीं किया उस पर हमने टैक्स पे नहीं किया. सो हाउ मच इज दैट अनपेड टैक्स? अनडिक्लेयर्ड इनकम इज Y minus X, multiplied that Y minus X with tax rate T. So your unpaid tax will be tax rate multiplied by undeclared income. ठीक है, so your unpaid tax will be equal to this. If I say that fine rate of fine, but you will have to pay fine if you are caught evading the tax. So if I say fine rate is F, then if a person has been caught, then he will have to pay a fine at the rate of F on this unpaid tax. वो unpaid tax हमें पे भी करना है, plus you have to pay a fine also.
सो ये नहीं है कि जब पर्सन ने टैक्स इवेड किया है एंड इफ दैट पर्सन हैज़ बीन कॉट तो वो अनपेड टैक्स से पे करेगा. ही हैज़ टू पे दैट अनपेड टैक्स ऑब्वियसली. In addition to that, on that unpaid tax there will be a fine also. So rate of fine is f. So how much will be the fine amount? Fine amount will become unpaid tax which is t into y minus x. इस पूरे नंबर को आप f से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. So amount of fine will be t into y minus x multiplied by f. कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन आप पहले यहाँ पे इस फॉर्म में लिख करके रखेंगे. I repeat the point. If a person is having some actual income y, his declared income is x, undeclared income y minus x, rate of tax is t, therefore unpaid tax on that undeclared income will be t into y minus x. I said fine rate is f, but you will have to pay fine on unpaid tax. So that unpaid tax is this multiplied by f will be the amount of fine. अब इस फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए सपोज आई राइट अ यूटिलिटी फंक्शन. तो यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. तो जो भी पर्सन का इनकम है उसकी यूटिलिटी होगी. जैसे एग्जांपल के लिए सपोज इफ आई से यूटिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, दैट मीन्स इफ इनकम इज 100 देन यूटिलिटी विल बी 10. If income is 200 then utility is under root 200. तो एक्चुअल में आप यूटिलिटी फंक्शन के फॉर्म में यूज़ करते हैं. नाउ इफ टैक्स पेयर एवेड विदाउट बीइंग कॉट, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. अगेन टेक दैट पर्सन. इफ देर आर टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, वन इज द इनकम व्हेन दैट पर्सन इज not caught evading tax, and one will be the income when that person has been caught evading tax. So when I say y and c, n c को read करेंगे not caught, c को read कर लिए caught. So if that person has been caught evading tax, his income is yc, not caught, his income is y and c. Therefore how much is his expected utility plus, suppose there is a probability p that that person will be caught and probability 1 minus p that person is not caught. So based upon that you can write the utility function as well. So how much is his expected utility? Expected utility, and utility is a function of y. So how much will be his expected utility? Obviously this income is uncertain and therefore use the word expected. So as you know expected निकालने के लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करते जाएगा और इस वैल्यू को मुझे फंक्शन में यूज़ करना है. वैल्यू को फंक्शन में अप्लाई करके लिखते हैं. तो ये लिखा रहेगा 1 माइनस पी इंटू वट, यूटिलिटी ऑफ इनकम व्हेन यू आर नॉट कॉट, प्लस probability into utility of income when person is caught. तो ये यूटिलिटी का इक्वेशन लिखा गया. यूटिलिटी इक्वेशन इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इक्वेशन है 1 माइनस पी इंटू दिस प्लस पी इंटू यूटिलिटी ऑफ इनकम व्हेन दैट पर्सन हैज़ बीन कॉट. तो रिमेंबर ये जब आप ग्राफ के टर्म में यूज़ करेंगे तो ये नॉट कॉट वाला एक्स एक्सेस पे लिख रहे हैं, कॉट वाला अगर हमने वाई एक्सेस पे ले रखा तो एक तरीके से ये गुड 1 है और ये गुड 2 है, जैसे नॉर्मली आप इंडिफरेंस कर्व का इक्वेशन यूज़ करते हैं. अब ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ जरा डिटरमाइन करेंगे. अब आपको ये बताना है कि इफ़ दैट पर्सन इज इवेडिंग अ टैक्स एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट कॉट, इफ आई से इनकम when person is not caught, so how much will be that income? ध्यान से स्टेप पहले स्टेप समझिएगा, इंटायर चैप्टर के अंदर ये है. यू हैव टू डिटरमाइन इनकम दैट पर्सन व्हेन दैट पर्सन इज नॉट कॉट, मतलब उसने टैक्स इवेड किया है बट दैट पर्सन हैज नॉट बीन कॉट. सो हाउ मच विल बी हिज इनकम देन? हिज एक्चुअल इनकम वाज वाई बट he paid tax on declared income.
So declared income was X, and on that he paid a tax at a rate of T. So Y minus T into X. I repeat the point. This is income when person is not caught. So his actual income was Y. He paid a tax on declared income. So out of that income he paid a tax on declared income. So Y minus Tx. So this income is Y and C. Now you have to determine how much is his income when he is caught, YC. तो अब आप ये बताएंगे ये वाली वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं when that person has been caught. So what will be his income now? If that person has been caught evading the tax, so how much will be his income? His income will be Y minus he paid a tax on declared income. So that amount first of all you have to subtract. Then after that what you will do? After that you will have to subtract further what? Income minus tax हमने पे कर दिया. But remember, if that person has been caught, then he will have to pay tax not only just on declared income but on complete income. तो डायरेक्टली भी आप ऐसे लिख सकते हैं income minus tax paid on that complete income. So Y minus Ty. But since that person has been caught evading tax, so he will have to pay a fine also. And how much will be the fine? Fine rate is F, and he will pay that fine on what? Pay that fine on the unpaid tax. So how much tax was unpaid? Unpaid tax was this amount. So first of all, when you evade a tax and if you are caught, then you have to pay tax on that entire income. So you pay tax on that entire income, and subsequently the tax which was not paid. Now since हमने total ले लिया है तो अब unpaid tax वापस चला गया, but on that unpaid tax you have to pay a fine. So Y minus Ty, further क्या minus करेंगे? You have to pay a fine. Fine on what? You have to pay a fine at a rate of F on this unpaid tax. So F into T into Y minus X. So income when that person is caught could be written as 1 minus T into Y minus F, और ब्रैकेट में लिखेंगे T Y minus X. ठीक है. So we have two different income here. One NC when that person has not been caught. Other is YC when that person has been caught. तो इन दोनों स्टेप को पहले तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा. ये दो इक्वेशन आप एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं. पॉइंट्स रिकलेक्ट कर लेंगे. एक्चुअल इनकम इज Y, declared income is X, undeclared income Y minus X, tax rate T, unpaid tax is this, fine rate is this. And we are discussing two different possibilities. If a person has been caught, his income is YC. He is not caught, his income is YNC. Probability of being caught is P. Probability of not being caught is 1 minus P. Therefore, his expected utility of income is this number. One, income when he is not caught, income minus the tax paid on declared income. Second, when person is caught, then he have to pay tax on complete income. So Y minus Ty, and he will have to pay a fine on the unpaid tax. So fine on that unpaid tax is this. ठीक है, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक के इक्वेशन को पहले आप इस फॉर्म में लिख देंगे. अब इसे क्या करना क्या है? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन you have to plot a budget line, and then by using that utility function you will draw indifference curve. So from here you will get indifference curve, and from these two number you will get budget line. तो ये दो नंबर पहले तरह ध्यान से एक जगह लिख लीजिएगा, and then use this graph to draw budget constraint. Use this diagram. Here you will write income when that person is not caught, and here it is income when that person is caught.
ठीक है, ये दो वैल्यूज़ यहाँ लिख दीजिए, और दोनों नंबर जो अभी लिखा था वो मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ। वाई एन सी विल बी इनकम माइनस टी एक्स, सो वाई एन सी इज़, वाई एन सी की वैल्यू एक्चुअल में टैक्स इनकम माइनस टैक्स, और दूसरा नंबर था इनकम व्हेन दैट पर्सन इज कॉट, सो इनकम माइनस टैक्स ऑन दैट कंप्लीट इनकम माइनस फाइन ऑन दैट अनपेड टैक्स, so that income when caught is 1 minus t into y minus f into t y minus x। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। दो सिचुएशन एक्चुअल में कंसीडर करना है। सपोज टेक टू एक्सट्रीम कंडीशन, एंड दोज टू एक्सट्रीम सिचुएशन है इफ x इज इक्वल टू y, बट व्हाट डज इट मीन? x इक्वल टू y का मतलब क्या होगा? x was declared income, y was actual income. So if x equal to y, it means you declare your actual income. So when you declare your actual income, then there is no evasion. Now if you have not evaded any tax, then your income, whether you are not caught or income when you are caught, will remain same because you have not evaded any tax. So if you have not evaded any tax, then it will be on this guaranteed consumption line, जैसे रिस्क वाले चैप्टर में करते थे। गारंटेड कंजम्पशन लाइन का एक पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया, दिस इज द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू y। बट ध्यान से बताना, इफ x इज इक्वल टू y तो कंडीशन क्या लिख देंगे? इनकम नॉट कॉट में भी हमने x की जगह यहाँ y कर दिया, बिकॉज x की वैल्यू y के बराबर ले रहे हैं। तो अगर y कर दिया तो ये 1 माइनस टी वाई हो जाएगा, तो यहाँ का नंबर हो जाएगा 1 माइनस टी वाई। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू वाई, एंड इफ़ यू आर कॉट, देन फिर से कॉट में आ जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन में। बट यहाँ पे इक्वेशन जो लिख रखा है उसमें x इक्वल टू वाई लेना है मुझे। x इक्वल टू वाई लेंगे तो कोई भी अनडिक्लेयर्ड इनकम नहीं रहा, तो कोई फाइन नहीं देना है, और 1 माइनस टी बाई ये नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, स्टेप क्लियर है? नॉट कॉट में आप ऊपर वाले नंबर को देखिए, बट ऊपर वाले नंबर में y माइनस टी एक्स लिखा है, x की जगह हमने y लिख दिया, तो y माइनस टी वाई ये नंबर हो गया, और कॉट वाला कंडीशन यहाँ आ जाएगा। बट आपको करना क्या है, x इज इक्वल टू वाई लेना है, तो x इक्वल टू वाई लेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। इस नंबर की बात हो रही है, y इक्वल टू एक्स, सो द रिमेनिंग टाइम विल बी ओनली 1 माइनस टी वाई। सो हियर ऑल्सो यू विल राइट 1 माइनस टी y, this is one point, and this is the point where x is equal to y. Now take the other extreme. Other extreme is x is equal to 0. But what does it mean, x equal to 0? When I say x is declared income. So if x is 0, that means you don't declare any income, so that is maximum evasion. दिस इज मैक्सिमम इवेजन। अब आप ये बताओ, इफ इट इज़ मैक्सिमम इवेजन, तो ये वाई एन सी की वैल्यू क्या होगी और वाई सी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वाई एन सी एंड व्हाट विल बी दिस? अगर x 0 है तो ये नंबर यहाँ 0 कर दिया। नाउ इफ यू हैव इवेडेड एंड यू आर नॉट कॉट, तो फिर टैक्स हमने पे किया नहीं, इंटायर इनकम मेरे पास बच जाएगा, तो नॉट कॉट में ये इनकम इधर y आ जाएगा, यहाँ का जो नंबर आप लिखेंगे ये y हो जाएगा। पॉइंट में रिपीट कर रहा, देखिए मैक्सिमम इवेजन में x 0 है, तो यहाँ x की जगह 0 कर देंगे, तो y एन सी की वैल्यू हो जाएगी y। सो इफ दिस वाज 1 माइनस टी वाई, y की वैल्यू इधर आ गई। सेकेंड, व्हाट विल बी दिस वैल्यू इफ x इज 0? x की जगह 0 कर लीजिए,
x की जगह इस इक्वेशन के अंदर आपने x की जगह 0 कर दिया है, तो उसके बाद का नंबर क्या आ जाएगा? x की जगह अगर आप 0 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की जगह 0 ले लिया तो ये 1 माइनस टी वाई माइनस एफ टी वाई आ जाएगा. सो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू, एक नंबर यहाँ करना है, वहाँ जो नंबर आ जाएगा ये लोअर वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट लोअर वैल्यू विल बी, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस एफ इंटू वाई. स्टेप और इक्वेशन ध्यान देखिएगा क्या लिखा गया. इस x की जगह आपने 0 लिखा है, तो ये इनफैक्ट टी वाई आ जाएगा दो जगह, तो t और y दोनों कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में रह जाना है 1 माइनस ये f वाला नंबर, तो 1 माइनस ये f वाली नंबर आ जाएगा. सो इफ दिस इज द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 0, नाउ कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स विथ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस लाइन इज बजट लाइन. एक्चुअल में ये लाइन बजट लाइन है. सो इफ दिस इज द बजट लाइन, हाउ मच इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? मान लो आप इस लाइन का स्लोप डिटरमाइन कर रहे हैं. सो व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन? तो बजट लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस. तो बेस में नंबर क्या आना है? 1 माइनस टी वाई है और यहाँ वाई है, तो डिफरेंस इनफैक्ट टी वाई हो गया. तो बेस की जो वैल्यू है वो हो गया टी वाई. और हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? स्लोप निकालने के लिए आपने परपेंडिकुलर बाय बेस किया, तो बेस का नंबर ये लिख दिया. परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस क्या है? 1 माइनस टी वाई यहाँ लिखा है, 1 माइनस टी ब्रैकेट में 1 प्लस एफ इंटू वाई है. तो हाउ मच इज दैट गैप? डिफरेंस ऑफ दिस टू, डिफरेंस ऑफ दिस टू इज टी वाई एफ. तो ये टी वाई कैंसिल हो गए. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज ओनली एफ. माइनस साइन यूज कर लीजिएगा नेगेटिव स्लोप के लिए. तो रिमेंबर स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट इज एफ, एंड व्हाट इज एफ? एफ इज रेट ऑफ फाइन. फाइन रेट है. तो अगर कभी क्वेश्चन में कहें कि फाइन रेट चेंज हो रहा है, तो आपको लाइन का स्लोप चेंज करना है. इस लाइन का स्लोप चेंज कीजिएगा इफ एफ विल चेंज. एफ चेंज होने पे ही लाइन का स्लोप चेंज होगा, अदरवाइज स्लोप ऑफ लाइन विल नॉट चेंज. तो स्लोप ऑफ लाइन विल चेंज ड्यू टू चेंज इन दैट रेट ऑफ फाइन. सो स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाई रेट ऑफ फाइन. अब ये दो पॉइंट एक्चुअल में आपने यहाँ मार्क कर लिया है. वेयर विल बी द ऑप्टिमल चॉइस? ना गिवन दिस बजट कंस्ट्रेंट, optimal choice could be here, it could be here, or it could be somewhere in between. So optimal choice, indifference curve is tangent on that budget line. अब आप सिंपली सा एक पॉइंट बताएंगे कि when you find optimal choice, then how to calculate that optimal choice? Obviously at that optimal choice you will say MRS is equal to slope of budget line, but slope of this budget line is F. तो MRS को equate कर देना है F से. And from where you will get MRS? MRS marginal utility का रेशियो है. Marginal utility of this income upon marginal utility of this income. Marginal utility of this upon marginal utility of this. But remember how you have written that utility function? वो यूटिलिटी का फंक्शन क्या लिखा था? यूटिलिटी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थी. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी was equal to 1 minus p, that is probability of not caught, multiplied by utility of income when that person is not caught, plus probability into utility of the income when that person is caught. तो from this utility equation if you calculate MRS, तो remember MRS इसे अगर आप y and c के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 माइनस पी बच जाएगा. सो 1 माइनस पी अपॉन, और वाई सी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट तो p रह जाएगा. तो 1 माइनस पी अपॉन p इज इक्वल टू f. सो एट दिस ऑप्टिमल चॉइस
at this optimal choice 1 minus p upon p will be equal to the rate of fine. तो एट ऑप्टिमल चॉइस कैलकुलेट एक्चुअल में कहीं न्यूमेरिकली नहीं करना है, बट इक्वेशन में जब एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द ऑप्टिमल चॉइस, देन रिमेंबर एट ऑप्टिमल चॉइस MRS इज इक्वल टू द रेट ऑफ फाइन. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व is MRS, slope of budget line is fine rate, and MRS is 1 minus P upon P, that is P is probability of being caught and F is the fine that you will have to pay if you are caught. So 1 minus P upon P is equal to rate of fine. तो ऑप्टिमल चॉइस की वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे डिटरमाइन हो रही है, बट डोंट रूल आउट द एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन इन द सेंस optimal choice could be at corner also, so it could be at this corner or it could be at this corner, but what will be the meaning of this corner? At this corner x equal to 0, but x equal to 0 means maximum evasion, and if it comes out to be this corner then x equal to y, but x equal to y means no evasion. So in the case of maximum declaration and in the case of zero declaration you can use these two diagram. रिमेंबर इसमें करना क्या, अब हर स्टेप में एक लाइन 45 डिग्री एंगल पे ड्रॉ कर लेंगे. मार्क दिस पॉइंट, देन दिस. जनरली ये x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू 0 है. यहाँ पे लिखना था मुझे y, ये वाला नंबर था 1 माइनस टी इंटू वाई, ये नंबर भी 1 माइनस टी इंटू वाई है, और यहाँ से जो नंबर है इसको ज़रा ध्यान से लिखेंगे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस एफ, एंड कॉमन पूरा टर्म है वाई. ठीक है, आगे आप फ्रंट पे लिख दीजिए. नाउ इफ ऑप्टिमल चॉइस इज एट दिस कॉर्नर, then it is a case of maximum evasion. ये maximum evasion का केस हो गया. and if it is at the other corner, फिर से वो लाइन ड्रॉ किया है, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 0, यहाँ y लिखना है, और ये 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस एफ, और कॉमन y है. नाउ इफ ऑप्टिमल चॉइस इज एट दिस कॉर्नर, देन दिस इज अ केस ऑफ नो इवेजन. सो एक्सट्रीम सिचुएशंस आर ऑल्सो पॉसिबल. There could be minimum declaration or there could be maximum declaration. तो maximum evasion का मतलब हो गया minimum declaration है, और no evasion का मतलब है maximum declaration है. So what could be the maximum declaration? X equal to y, and what could be the minimum declaration? x इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये फैक्टर आपने सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है. अब यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट होगा इस यूनिट के इस चैप्टर के अंदर, उसमें ये डिटरमाइन करना है कि इफ़ फाइन रेट विल चेंज देन हाउ टैक्स इवेजन विल चेंज. इफ लेवल ऑफ इनकम विल चेंज, हाउ टैक्स इवेजन इज अफेक्टेड. इफ टैक्स रेट चेंजेस, then what will be the effect? If probability of being caught changes, then what will be the effect? So basically you have noted 4 points, and those 4 points determine the decision of tax evasion. So your decision to evade tax depends upon those 4 factors, and if those factors will change, then the decision to evade tax will also change. So अभी तक के क्लास के अंदर बेसिकली आपने ये ओनली टैक्स इवेजन जो कंसेप्ट है वो किया, टैक्स इवेजन का पार्ट. एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग टैक्स इवेजन डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन, फाइन रेट, लेवल ऑफ इनकम एंड टैक्स रेट.
ये 4 अलग अलग डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सप्लेन होगा, बट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जो मेन थिंग है इसमें थोड़ा सा अलर्टनेस रिक्वायर्ड है. यू हैव टू लर्न सर्टेन इक्वेशन. इनकम एक्चुअल y है, डिक्लेयर्ड इनकम x है, अनडिक्लेयर्ड इनकम y माइनस x है, टैक्स रेट t है तो अनपेड टैक्स t इंटू y माइनस x है, एंड यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ f इज द रेट ऑफ फाइन. You have to pay that fine on this unpaid tax, and there are 2 different possibilities when you are not caught and when you are caught. Probability of being caught is p, probability of not being caught is 1 minus p. Utility function लिखा है, when you are not caught you are left with income minus that tax which you pay on the declared income. If you are caught you have to pay tax on the complete income as well as the fine to this number. और इन सबको यूज़ करते हुए एक्चुअल में यू हैव ड्रॉन अ बजट कंस्ट्रेंट, एंड दैट बजट कंस्ट्रेंट हैज़ बीन ड्रॉन बाय टेकिंग 2 एक्सट्रीम असम्पशन व्हेन x is 0 and when x equal to y. And for determining that optimal choice you are equating MRS, that is slope of budget indifference curve, with the slope of this budget line, and slope of that budget line is fine rate. Slope of indifference curve is MRS, which is 1 minus p upon p. So obviously this point will change when either f will change or when p will change or when income will change or when tax rate will change. तो वो 4 पॉइंट जो एक्सप्लेन कर रखा है वो नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर लेंगे और वो चैप्टर यहाँ पे और हो जाएगा. सो इट विल बी टेकिंग 1 or 2 क्लास टू कंप्लीट दिस टैक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी लेफ्ट बेसिकली विद द इंट्रोडक्शन and the section B, but it is mainly public finance, Indian public finance, GST, what are the advantages, गवर्नमेंट के बजट. तो उसमें ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना. सो दैट विल बी एन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन. सो विल कंटिन्यू विद दिस. नेक्स्ट क्लास में टैक्स इवेजन वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके.